Hello, welcome students. Today's topic is tracking changes. See, tracking changes is a very important feature and is mostly usable. In that case, if a same document is to be edited and used by multiple people. For example, suppose I have created a document and I have to give that document to someone for proofreading and correction. So at that time, this feature is very useful. For example, suppose I have created the document and I have given someone. Now he reads that document and eventually he modified some part of it and then returned to me. Now, how am I get to know that which part of my document, which word, which sentence is being changed? So there are two ways. Either I have the original file with me, original document with me, and the updated document, both if we are having, then by comparing both of them, we can get to know that what are the changes being done in my document. But this process takes a lot of time as we need to compare manually. But this feature, that is tracking changes feature, if we enable it, then whenever someone else modifies our document, so that modification will be highlighted. Now it is up to me, if I am creator of the document, then it is up to me to accept or reject changes made by someone. So it is a very smooth process by which we can identify and accept or reject changes being made in the document. So we are going to start with it. In a school, college, and other workplaces, sharing a single document is a very common practice. In such case, we need to keep track of changes that are made to the document. MS Word has an inbuilt feature to record the changes made to an original document like insertion, deletion, move, formatting changes or comments that you make. So whenever someone else changes the document, like he or she have inserted something, deleted something or moved some part of the document, formatted, that means changing the color, indentation, whatever, or he or she have commented on my document, so we get to know that particular change, so that you can review all the changes later. As you review the tracked changes, you can accept or reject each change. When you use this facility, all the changes that you have made can be seen with the red underline. That means if you enable this feature, then whenever someone else changes the document, the changes will be highlighted with red underline. To enable track changes feature, the next thing is how we can enable track change feature. So it's very simple to enable the track change feature. We just need to click on the track changes toggle button. Actually, see, the toggle button is a button. When you click on it, it will be enabled, and if you again click on it, it will be disabled. So steps to do the same is given here. Open the document you want to revise. That means you have to open the document in which you want to enable the track changes. Now select the review tab. You need to click on the review tab. It is just given before the view tab. जैसे आप अपने MS Word डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है, वैसे ही वहाँ पे एक टैब होगा दैट इज़ नोन एज रिव्यू टैब. तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द रिव्यू टैब. ऑल
The options related to the review tab will be given on the ribbon of MS Word. Now click on the track changes button. It is a toggle button in the tracking group. तो जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे ट्रैक चेंजेस बटन है। ये एक टॉगल बटन है, जैसा मैंने अभी बताया है। एक बार प्रेस करोगे तो ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाएगा, एक बार और प्रेस करोगे तो वो फीचर ऑफ हो जाएगा। तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन. Now make the changes you want by inserting, deleting, moving text, or by adding graphics. After enabling it, you do whatever changes you want to make in the document, and that would be recorded. Now the next thing is to accept or reject changes. So suppose the track changes feature is on. Now some changes has been done in the document. Now if we want to accept or reject the changes, then we have to follow the given steps. In the review tab, you will find the accept and reject option in the changes group. These buttons allow you either to accept or reject the changes, which you can see in this diagram in changes group. ये भी review tab में ही होगा. The first button is accept button and second button is reject button. इसके बाद previous और next भी होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो click on the underlined change. जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे भी कोई चेंज किया है तो वहाँ पे रेड कलर की अंडरलाइन आएगी. तो you just need to click on the underlined change. Select the accept button if you want to incorporate the changes in the document, or else click on reject button. So first you need to select the changes that is done in the document. Now click on the accept button to accept the changes and click on reject button to reject the changes. While rejecting the last change, Microsoft Word prompts a message. The document contains no comments or tracked changes. Click on OK. Now all the changes has been rejected. So you need to click on accept to accept the changes and reject to reject the changes. Now you can see by this diagram, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये रेड कलर से आ रहा है, मतलब और रेड कलर से भी आ रहा है, और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बीच में स्ट्राइक थ्रू किया गया है, एक लाइन से कटा हुआ है, मतलब ये जो ये 3 वर्ड्स हैं इनको हटा दिया गया है. ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी हटाया हुआ है. फिर यहाँ पे ग्रीन लाइन से है, मतलब यहाँ पे एक नया सेंटेंस ऐड किया गया है. और साथ ही साथ आप इस साइड में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कमेंट्स मिल जाएंगे. तो फॉर्मेटेड फॉन्ट कलर रेड, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग की गई है और फॉन्ट कलर रेड है. यहाँ पे कमेंट है आई लाइक दिस, तो ये कमेंट इस लाइन पे है. फिर उसके बाद अंडरलाइन किया गया है, फॉन्ट कलर ग्रीन किया गया है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है. तो ऐसे ही जितने भी आप चेंजेस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, दैट वुड बी विजिबल इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर हम इसका प्रिंट आउट लेंगे तो उस केस में ये जो कलर है और कमेंट्स हैं ये प्रिंट नहीं होंगे. प्रिंट तो आपका डॉक्यूमेंट ही होगा, लेकिन ये जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस हमने यहाँ पे किए हैं, ये चेंजेस आपको अपने कंप्यूटर में जब आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे देन इट इज़ विजिबल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज़ रिव्यूइंग कमेंट्स. तो in MS Word, one uses comments in a document when sharing it with someone else. They are usually used when multiple users are working on a document. User can add or delete comment with the view to improve the content or layout of the document. तो अगर एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोग यूज़ कर रहे हैं तो ओरिजिनल क्रिएटर को डॉक्यूमेंट के बारे में अगर कोई चीज़ बताना चाहता है कोई पर्सन, तो ही और सी कैन गिव कमेंट्स. एंड कमेंट्स आर वेरी यूजफुल वे ऑफ signifying that what is being done in the document.
Now the thing is how comments, we can add comments in the Word document. तो let us learn how we can add comment in a Word document. तो इसके लिए भी आपको रिव्यू टैब में ही जाना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिव्यू टैब सेलेक्टेड है और इस रिव्यू टैब में कमेंट ग्रुप ऑफ बटन में यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू कमेंट, दूसरा है डिलीट कमेंट, तीसरा है प्रीवियस, ऐसे ही होगा नेक्स्ट। तो select, let us learn how we can add comment in a Word document. So first of all, select or click on the text you want to add comment. So first you need to select the text on which you want to add the comment and now click on the review tab. After selection, click on the review tab. Now select the text on which you want to add a comment. Now in the comments group, क्लिक ऑन द न्यू कमेंट बटन। तो पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, रिव्यू टैब में गए और रिव्यू टैब में जाके ये जो पहला ऑप्शन है न्यू कमेंट का कमेंट्स ग्रुप में, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन। नाउ इन द you will find a text space in the right side to insert your comment. Just type in whatever you want to leave, whatever you want to and leave it as it is. तो जब भी आप कमेंट न्यू कमेंट बटन पर प्रेस करेंगे तो जैसे आप यहाँ देखोगे कि एक कमेंट का स्पेस यहाँ आ गया है, वैसे एक स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे भी जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए, वो कमेंट वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। Now you can even format the comment in the comment box with bold, italic, underline to highlight the importance of the comment. तो once you have added the comment, तो आप चाहें तो उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन change the formatting of the comments to highlight them and to signify its importance. Now review multiple comment in the document. You can move to and from one comment to another by simply clicking on a particular comment or by selecting the previous button or next button in the comment group. तो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया है कि प्रीवियस बटन है और नेक्स्ट बटन है, आप देखेंगे कमेंट ग्रुप पे तो यहाँ पे आपको प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन मिलेगा। तो आप इस प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन का यूज़ करके भी कमेंट्स में मूव कर सकते हैं और सिंपली आप अगर कमेंट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लो 3 कमेंट हमने बना रखे हैं तो पहला कमेंट पे हम हैं, दूसरे पे क्लिक करोगे तो भी आप उस पर जंप कर जाओगे। Now select a comment box in the document. Now click on the next button in the comment group. The cursor will move to the next comment box in the document. तो उसके लिए आपने पहला कमेंट बॉक्स सेलेक्ट किया, नेक्स्ट बटन पे प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मूव कर जाओगे और ऐसे ही आप प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द प्रीवियस बटन, आप प्रीवियस कमेंट बॉक्स पे मूव कर जाओगे। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ जंपिंग फ्रॉम नेक्स्ट टू प्रीवियस कमेंट। और similarly to move the previous comment you can select the previous button in the comment group. Now the next and last topic of this chapter is deleting a comment. तो suppose that you have created a comment, you have written something, अब आपको ये लगता है कि अब इस कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसके लिए डिलीट कमेंट बटन तो आपने देखा ही था कि यहाँ पे रिबन में जैसे न्यू कमेंट बटन था उसी के जस्ट बगल में डिलीट बटन है, आपको इसका यूज़ करना होगा कमेंट्स को डिलीट करने के लिए। तो एज द टेक्स्ट और लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी टू रिमूव अ कमेंट। You can delete comments from a document in the following way. First, click on the comment you want to delete. पहले आप उस कमेंट पे क्लिक करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। Now on the review tab and click on the review tab and select the delete button in the comments group. In the comments group, click on delete button or right click on the comment you want to delete and then select delete comment button from the shortcut menu. तो दोनों तरीके हैं, आप कमेंट को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या आप राइट क्लिक करेंगे कमेंट पे
और वहाँ से जो पॉपअप मेन्यू आएगी उसमें से आप डिलीट कमेंट बटन प्रेस करेंगे तो भी आपका जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन add comment, delete comment, track changes, accept and reject changes. So student, I hope you all understand the whole MS Word. Now moving forward, these are the questions. Solved one, you do not need to solve in your copy. Now there are some unsolved questions given here which you have to solve in your copy. The first question is, explain the process of inserting image from the clip art. So student, the answer is given on page number 199 in your book. You can see insert you can see here inserting image from clip art. The steps are given here. So it is given on page number 199. So you need to write all the steps to add the image from clip art. Now the next question is, what is multi-level list? Explain the method to create a multi-level list. So the answer of this question is not given in your book. Actually, multi-level list is a list in which there are multiple levels. Like suppose कि the list is numbered list 1, then if you move to the next line, then you need to press the tab key. When you press the tab key, it will be shifted towards the right. Suppose wait 1 minute. When you move to the next line and press the tab key, you will move here. Now if you write A and then press dot, and you can write another line, then B dot another line, and so on. Now again, if you want to move this way, so you need to press the backspace key and you start typing like this. So this type of list is known as multi-level list. You have to solve it by your own, and in case you are having doubt, please contact. Now third is, explain the method of adding 2 rows and 1 column in an existing table. तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी कि हाउ यू कैन ऐड अ कॉलम 2 रोज़ एंड 1 कॉलम, कैसे आपको रोज़ और कॉलम्स को ऐड करेंगे अपने टेबल में. तो दैट इज़ गिवन इन अंडर द टेबल. तो उस केस में आप देखो कि अगर आप रो और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं कि या तो आप बाई ऑप्शंस जा सकते हैं और यू कैन गो बाई ड्राइंग. तो ये कई मेथड दिए हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3. इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ करके ऐड कर लेंगे रो एंड कॉलम. ये आपके बुक में पेज नंबर 205 पे दिया हुआ है. तो स्टूडेंट, यू कैन सॉल्व एनी बाई एनी ऑफ द 3 methods. Now moving, next question is, how will you rotate the text in a table cell? तो again it belongs to table. और फिर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बुलेट्स एंड राइट द स्टेप टू ऐड द बुलेट्स टू अ लिस्ट. तो इन दोनों का आंसर मैं एक साथ ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ. कि पहला जो क्वेश्चन था कि आप टेबल्स में किस तरीके से रोटेशन करेंगे, तो दैट यू कैन फाइंड हियर in your book, rotating text in a cell. So you need to write all the steps to rotate in a cell, and is given on page number 204. And bullets के जो ऐड करने के steps हैं that are given here on page number 201. तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से गेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, प्लीज़ नोट इट डाउन. Now the next question is, explain the method of merging cell in a table. So in my previous video I have explained this कि how you can merge cell in a table. You can get this option here, merging and splitting cell, given on page number
208। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मर्ज वाला दिया है ऑप्शन, तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन ऐड कमेंट टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ पे अभी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एडिंग कमेंट, तो वो दिया है पेज नंबर 212 एंड 213 पे। जैसा आप यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया है और नेक्स्ट पेज तक गया है, तो यू कैन राइट बाई दिस। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ यू कैन रिकॉर्ड द चेंजेस मेड टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है जस्ट बाय यूजिंग द ट्रैकिंग चेंजेस ऑप्शन वी कैन record the changes made by the document। and last है explain the method of splitting cell in of a table। तो इसका आंसर वहीं पे दिया है जहाँ पे आपने merge का ऑप्शन देखा था, जस्ट उसके जस्ट बिलो the option to splitting the cell is given। तो student, I hope you all understand it। please solve all these questions and application based questions is for you। So try to solve all these questions, and in case of any doubt please feel free to contact। Thank you।